Hello, dear students. How are you? Once again, welcome to my YouTube channel. Myself, SP Sir. Full form you know already. Shiv Prasad Sir. So, let's start your today's 12th economics lecture. Dear, within few seconds, we are going to start your economics video lecture. But before that, as I have already told you that you must be ready with your pen and a copy. So, have you kept the things ready? Are you ready with your pen and copy? Yes, dear students, within a few seconds, hardly within 10 seconds, we are going to start your video lecture. So, get ready with your pen and copy. Here we go. We are about to start your video lecture. Welcome once again. Here we go. Let's start your video lecture. Good morning, everybody. How are you? Is everybody happy? Happy as well as safe at your homes. Dear students, once again welcome to my YouTube channel. Myself, SP Sir. Full form you know already. Shiv Prasad Sir. Dear students, today that is on 6th October 6th October 2020. Dear students, today in our 12th economics lecture, as I have already started the chapter number 5 from your introductory macroeconomics, that is government budget and the economy, government budget and the economy. So, my dear students, as I told you that it is chapter number 5, or you can say that unit number 5 from macroeconomics, government budget. Number of video lectures already have been taken by me. Dear students, the last video lecture, which was on budget deficit, and under the topic budget deficit, we had discussed different types of budget deficit, and the last one which I had discussed with you, it was fiscal deficit. So, as you know that there are total 3 types of budget deficit. Number one, yes, and number 2, which one? Just now I said fiscal deficit, and the number 3rd one is primary deficit. So like this, we can say that so far I have finished first two budget deficits. In the last lecture itself, I had told you the coming video lecture will be on the implications of the fiscal deficit, because I have already discussed with you the meaning of fiscal deficit. So this video lecture which you are listening just now, this video lecture is the continuation of the last video lecture itself. So what we are going to learn today? Today we are going to learn the implications
implications of fiscal deficit. Implications of fiscal deficit. This we are going to learn today. So you can say that today's topic for discussion is implication of deficit. It is a subtopic of the budget deficit itself. Under the heading budget deficit, we discuss fiscal deficit, and today we are going to discuss implications of fiscal deficit. Dear students, attend here everybody. Fiscal deficit meaning is already discussed with you. It is already clear. So we can say that greater fiscal deficit implies greater borrowings by the government. Did you pay attention to the sentence which I just told you? What did I say? I repeat, greater the fiscal deficit implies that greater borrowings by the government. सिंपल सा इसका मीनिंग क्या हुआ कि फिस्कल डेफिसिट जितना ग्रेटर होगा, जितना ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स भी उतना ज़्यादा होगा. इन द लास्ट लेक्चर, while teaching you fiscal deficit, we had discussed about the borrowing sources of the government. Over there, we had discussed that government borrows from RBI, as well as government borrows from public in general, as well as government borrows from rest of the world. So these are the three main sources of borrowings for the central government. So same is being discussed over here. I told you that greater the fiscal deficit in the budget, the effect of that what will be? The government's borrowings will be greater or higher. So as deficit increases, what is conclusion? As fiscal deficit increases, the government's borrowings also will increase. Why so? The meaning you know already, because fiscal deficit means what? Government's budget expenditure are greater than government's budget receipts. What is greater? Budget expenditure is greater than budget receipt. Budget receipts are less as compared to budget expenditure. So this is called as a fiscal deficit. Okay. So to fill that deficit, to cover up that deficit, the government will have to be borrow from RBI, or borrow from public, or borrow from the rest of the world, say for example from World Bank. So dear students, in implications, the first implication which we are going to learn is inflationary spiral. Inflationary. By the way, I would like to tell you one more thing, that today I am using a whiteboard. So chances are there that whatever I am writing over here, sometimes it may not be that much clearly visible. So don't worry about that. You are seeing me, you are watching me, you are listening my voice, that is sufficient, because on board
today I will write just headings, which means points, the points of the discussions. So I will be repeating it continuously. Don't worry about that. So under the heading implications of fiscal deficit, the first one we are going to learn inflationary spiral. Inflationary spiral. Inflationary spiral. Dear students, first of all, go word to word. Think word to word that what is mean by inflation, because the first implication heading already I have written. The first point I have written inflationary spiral. Inflationary spiral. So what is inflation? Inflation means rise in the market price. Yes or no? Inflationary. Rise in the market price. So as we are learning the implications of the fiscal deficit, because of fiscal deficit, I told you that greater the fiscal deficit, there will be greater borrowings by the government. So because of, attend here now everybody, because of borrowings of the government, the money supply in the market will increase. Did you listen? What did I say? Yes, dear students, I said that due to borrowings of the government, the money supply in the market will increase. So for example, government borrowed from RBI. Government borrowed from RBI. So because of government's borrowing, the money supply in the market will increase. What does this mean? That money supply increase in the market. Increase in the market, the effectively, what will be the effect for that? The effect will be inflation. And we will see that inflationary rise, or we can say that inflationary spiral. Borrowings from RBI, increase in money supply, increase in prices, inflationary spiral. So the same thing I am going to write in the board, on the board. What is that? Borrowings. Borrowings from RBI. Borrowings from RBI. What is RBI? You know that, Reserve Bank of India. Borrowings from RBI, it leads to increase. It leads to increase in money supply. It leads to increase in the money supply. Money supply leads to increase money supply in the market. In the market. And because of this, because of increase in the money supply in the market, there will be increase in prices. Increase in price. Increase in price. Because of increase in price, there will be inflationary spiral. Inflationary spiral. Inflationary spiral. Inflationary spiral. Yes, dear students, are you able to watch the things clearly on the board? If not, don't worry about that. As I said that I will be reading whatever written on the board continuously. So, dear students, I have started already
The game has already started. What's that? Our discussion is implications of fiscal deficit, and the first point of our discussion is inflationary spiral. Over there, I said that at the beginning I told you that greater the fiscal deficit, there will be greater the borrowings by the government. So, first implication I told you that inflationary spiral, borrowings from RBI. By the way, I told you that from where the government will borrow funds, either from RBI or from rest of the world or from the public in general. So suppose borrowings from RBI leads to increase in the money supply, that leads to increase the increase in prices, and we observe the inflationary spiral. Are you getting me, everybody? No doubt. So like this, we completed our first implication, first point, that is inflationary spiral. By the way, over here which I told you that increase in price, so it is nothing but increase in the general price, or we can say that increase in the market price as a whole. Got it? Next one is national debt, DEBT. Second one which we are going to discuss is national debt, DEBT. National debt, many a times it is observed that the people read it debt, DEBT. It's not debt, it is debt. National debt. Obviously, so this is already clear when I told you, when we discussed the first statement, the first statement was, which I am going to repeat the third time. What is that? Greater the fiscal deficit implies greater borrowings by the government. Greater the fiscal deficit implies greater the borrowings by the government. So dear students, fiscal deficits leads to national debt. It hinders the GDP of the nation. Yes or no? You know that GDP. What is a GDP? Gross domestic product. Because a significant percentage of national income is used to pay the interest on the money borrowed, or we can say that to pay the debts of the government. एकदम सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट, ध्यान देना, अटेंड हियर प्लीज एवरीबॉडी, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट बोरोड फंड्स आइदर फ्रॉम RBI और फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सच अ केस नेशनल डेट विल इंक्रीज. यस और नो? इसी को आम भाषा में क्या बोलते हैं कि देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, कर्जा, डेट्स बढ़ेंगे. यस और नो? आपने भी सुना होगा न्यूज़ में, आपने भी रीड किया होगा न्यूज़पेपर में दैट हमारा गवर्नमेंट ने इतना लोन लिया है RBI से, इतना लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से. उसी का बात हो रहा है हमारा, वही चर्चा कर रहे हैं हम लोग. ये जो बोल रहे हैं नेशनल डेट कि फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा का फंड्स बोरो करना पड़ेगा. बोरो करना पड़ेगा मतलब क्या? लोन लेना पड़ेगा. नेशनल डेट विल इंक्रीज एंड इसका इफेक्ट हमारा GDP ग्रोथ पर होगा.
जीडीपी मतलब क्या, हमारा जो नेशनल इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कम हो जाएगा. दैट विल हाइंडर द जीडीपी ग्रोथ. यस और नो? बिकॉज ये जो नेशनल डेट है तो इसको पे भी तो करना पड़ेगा ना. यस और नो? मतलब गवर्नमेंट जो फंड्स बोरो कर रही है उसको पे भी तो करेंगे. तो कुछ पास्ट डेट्स भी होंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना लोन का या जो इंटरेस्ट पे करना. सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट आवर जीडीपी ग्रोथ. सो ओवर हियर यू कैन राइट दैट national debt affects what? GDP growth. GDP growth. How it affects GDP growth? Because government has to pay the dates, the past dates, or even this date also. So it will affect in the future the GDP growth. So like this, first two implications we have discussed: inflationary spiral as well as national debt. The third one which we are going to discuss is vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth. Vicious circle. Third one, vicious circle of what? High deficit. Vicious circle of high deficit and what? Low GDP. Dear students, it is a vicious circle. Vicious circle का मतलब ये चक्कर चलते ही रहता है. Vicious circle, जिसको ऐसा आम भाषा में चक्रव्यूह बोल सकते हैं. चक्रव्यूह कैसे, क्या? Vicious circle of high deficit and low GDP growth. Low GDP growth. My dear students, if you have paid attention while discussing these 2 points, first 2 points, that is inflationary spiral as well as national debt, then you could be able to explain this without my explanation. अगर ये पहले के दोनों पॉइंट डिस्कस करने के टाइम पे आपने बराबर ध्यान से सुना होगा तो ये पॉइंट अपने आप समझना चाहिए आपको. यहाँ पे क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स मनी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीजेस एंड उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, दैट इज मार्केट प्राइस लेवल, एंड इफेक्टिवली the country experiences what? Inflationary spiral. Because of national debt, what happens? That it affects the GDP growth. How it affects GDP growth? Because of dates or the past dates. The government have to pay dates, so the GDP will be lower because of payments. Same thing is explained over here in this also, that vicious circle of high deficit. फिर से वही बात बोलना चाहूँगा जो सेंटेंस मैंने पहले बोला, शुरुआत में बोला. क्या सेंटेंस बोला? ग्रेटर द फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज ग्रेटर बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट. वही बात यहाँ पे आपको बताया जा रहा है. क्या बोल रहे हैं?
हाई डेफिसिट, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट का बोरोइंग्स ज़्यादा होगा तो फिर इट विल अफेक्ट द जीडीपी ग्रोथ। तो ये चलता ही रहता है। कैसे कि अगर जीडीपी ग्रोथ कम है, जीडीपी ग्रोथ अगर कम है मतलब हमारा ग्रोथ रेट अगर लो है, सो बिकॉज ऑफ ग्रोथ रेट लो आगे डेवलपमेंट कम होगा। यस और नो? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कम होंगे, लोगों को जॉब कम मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होगा, लोगों का परचेसिंग पावर कम होगा, लोगों का इनकम कम होगा। अब लोगों का परचेसिंग पावर कम, लोगों का इनकम कम, तो गवर्नमेंट को मिलने वाला रिसीट्स कम। अब गवर्नमेंट को मिलने वाला रिसीट्स कम, इट मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगा, और अगर गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो फिर से क्या, देयर विल बी हाई डेफिसिट। उसका इफेक्ट क्या होगा, लो जीडीपी ग्रोथ। बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ देयर विल बी लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देयर विल बी मास पॉवर्टी, इंक्रीज इन द poverty level, employment opportunities less, it means that purchasing power less, income of the people less, it means what, the government's receipts will be less, and ultimately what will happen, the fiscal deficit will rise, and once again government will have to go for borrowings। तो ये जो विशियस सर्कल है ये चलता ही रहता है, विशियस सर्कल ऑफ हाई डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। आई होप यू गेटिंग मी। इसके दो मेन कारण बताया मैंने। जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो because of high fiscal deficit remains high because of low GDP growth. So dear students, I hope the first 3 points are clear to all of you. The first point I explained today, that is inflationary spiral. Second one I explained national debt, DEBT debt, and just now we discussed about vicious circle of deficit and vicious circle of high deficit and low GDP growth. So this, अब इतना सब डिस्कशन को इजीली ध्यान में रखने का तरीका क्या है, ये विशियस सर्कल ऑफ हाई डेफिसिट, जस्ट 2 पॉइंट ध्यान में रखो। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ high deficit it will affect the GDP growth. Because of low GDP growth there will be high deficit, तो ये चलता ही रहता है, vicious circle. Dear students, the next point I am going to discuss is crowding out. Crowding out, CROWDING, crowding out. Number 4, crowding out. Crowding out, CROW, crowd, उसमें ING लगा दिया, crowding out। ये स्पेलिंग क्यों बता रहा हूँ बार बार, वो मैंने पहले ही बताया आपको। वाइट बोर्ड है तो हो सकता है विजिबल वो उतना अच्छा विजिबिलिटी ना हो जितना कि ग्रीन बोर्ड में होता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव बीन रीडिंग इट। क्राउडिंग ग्रोथ, आई एम सॉरी, क्राउडिंग आउट, CROWDING, क्राउडिंग ग्रोथ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्राउडिंग आउट। डियर स्टूडेंट्स, ये क्राउडिंग आउट का मतलब क्या, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल, इसको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ।
बोरोइंग्स, पहले मैंने आपको बताया कि अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट बाय द वे गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम पब्लिक का जगह पे डोमेस्टिक बोरोइंग्स ऐसा भी आप बोल सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम अब्रॉड। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स ज़्यादा होगा। तो बोरोइंग करने वाला क्या खाली गवर्नमेंट ही है? I hope you're getting me. Means indirectly I am talking about the public sector as well as private sector. In India, which economy is there? Mixed economy. You know already. In India there is mixed economy. We are having public sectors as well as private sectors. हाँ, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट आजकल पब्लिक सेक्टर को बेचने पे लगी हुई है, यस और नो? एनीवे, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, गवर्नमेंट हर एक चीज़ का निजीकरण करने जा रही है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? क्राउडिंग आउट। आई वॉज सेइंग दैट मार्केट में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों भी है मार्केट में। मतलब गवर्नमेंट भी बोरो कर रही है और जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो लोग भी बोरो कर रहे हैं मार्केट से। तो अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, ध्यान देना, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का बोरोइंग्स भी ज़्यादा होगा। सपोज दिस इज़ मार्केट, इट इज़ मार्केट, तो ये मार्केट में दोनों भी जन है। कौन कौन है? गवर्नमेंट भी है और जो प्राइवेट पार्टीज़ है वो भी है। तो गवर्नमेंट भी अगर ज़्यादा का बोरो कर लेगी तो प्राइवेट के लिए तो कम ही बचेगा ना। उसी को नाम क्या दिया? क्राउडिंग आउट। मीन्स गवर्नमेंट्स टेक्स आउट, गवर्नमेंट takes out lot of funds from the market. So very less amount of funds are available for private companies, or we can say that for private sector. Dear students, last one which we are going to discuss is a fifth point, erosion of government's credibility. I am writing over here the fifth point, erosion of governments, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट्स क्रेडिबिलिटी, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट्स credibility. Dear students, घूम फिर के वहीं पे फिर से जाना पड़ेगा। क्या? ग्रेटर द फिस्कल डेफिसिट implies greater borrowings by the government. तो इसको जरा दूसरा ढंग से सोचो कि जो गवर्नमेंट या जो कंट्री बहुत ज़्यादा का बोरोइंग्स करेगा, आई होप आपका ध्यान बराबर जा रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट ज़्यादा का बोरोइंग्स करेगा, जैसा अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने समझो वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा का लोन ले लिया,
तो बाहर का कंट्रीज़ में, बाहर के जो अदर नेशंस हैं, वर्ल्ड के जो अदर नेशंस हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, आवर मल्टीनेशनल कंपनीज़, ये जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक ऐसा देश, एक ऐसा कंट्री जिसने बहुत सारा पैसा लोन लिया है, आपने भी सुना होगा, तो ऐसा कंट्री का जो क्रेडिबिलिटी है वो मार्केट में इरोज होने लगता है। इरोज होने लगता है मतलब वो कम होने लगता है क्रेडिबिलिटी। फिर वो जो FDI है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उतना इजीली नहीं होता है उस कंट्री में, उस देश में। फॉरेन कंपनीज थोड़ा कम इंटरेस्ट लेंगी, तब उस देश में इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगी कंपनीज। क्यों डरेंगी? उनका दिमाग में तो यही होगा कि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने बहुत सारा कर्जा, बहुत सारा लोन वर्ल्ड बैंक से उठाया हुआ है, तो फिर हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा वहाँ पे। हो सकता है कि हम अगर इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, लॉस होगा हमको। तो इस तरह से हम बोलते हैं दैट इंटरनेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी है, आसान शब्दों में बोलें तो गवर्नमेंट का जो गुडविल है, गवर्नमेंट का जो इमेज है, वो डाउन होता है। और उसका इफेक्ट क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज विल बी लेस इंटरेस्टेड फॉर FDI in that country. Dear students, like this, today we could finish all the 5 points of the implications of fiscal deficit. I am going to summarize my today's lecture, what we discussed today. Attend please, last few minutes. Dear students, today we discussed implications of fiscal deficit. It is part of budget deficit itself. When we say that budget deficit, so at that time there are 3 types of budget deficit. Which one? Revenue deficit, fiscal deficit, and third one, yes, primary deficit. So under fiscal deficit, first we discussed in the last video lecture the meaning of fiscal deficit. In detail we have discussed, and today we discussed the implications of fiscal deficit. The first implication, we discussed that inflationary spiral. Second, we discussed national debt, and third one we discussed that vicious circle of high deficit and low GDP growth. Fourth one we discussed, that is crowding. We discussed that crowding out, and fifth one, just now I discussed with you, that is erosion of government's credibility. So that's all for the day. Thank you very much for kind cooperation, and at last, chalte chalte, don't forget to comment, like and share my video lectures. Thank you very much for kind cooperation.